Hello kids, my name is Aastha and you're watching Delhi Knowledge Track. I welcome you all to our classes for the International English Olympiad Class 4th. Today is our 9th class and the topic for today's video is articles. Articles is a fairly easy topic but little tricky one if you don't know the basics. So I hope that you will watch this video very carefully so that first we understand the concepts and then extra carefully when we solve the exam. This mock exam will consist of sample questions on the basis of pattern of the actual IEO exam, and these questions they are taken from the book of MTG publications. This is just one of the many books which are available in the market for IEO study and you can choose any of them as per your convenience. I have just chosen this one for my reference. So let's start today's class. So what are articles? सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल्स होते क्या हैं? Article is a word that combines with a noun to specify the type of reference to the noun. Oh my God, ये क्या मीनिंग दे दिया? बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आप इसका बेसिक मीनिंग समझते हैं, फिर हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये मीनिंग क्लियर हो जाएगा. An article is a word that combines with a noun. ये तो समझ आ गया कि जो आर्टिकल है वो नाउन के साथ यूज होगा. To specify the type of reference to the noun. To specify the type of reference to the noun. मतलब आर्टिकल जो वर्ड है वो नाउन के साथ यूज होगा और स्पेसिफाई क्या करेगा? टाइप ऑफ रेफरेंस टू द नाउन. ये रेफरेंस होगी दो तरीके की. वन कुड बी स्पेसिफिक, ओके, एंड द अदर कुड बी जनरल. ये जो दोनों रेफरेंसेस हैं हम समझेंगे कि कैसे कैसे आर्टिकल्स में यूज होती हैं. तो एक चीज हमने समझी कि ये नाउन के साथ यूज होगा एंड दूसरा ये हमें बताएगा रेफरेंस. रेफरेंस मतलब कि या स्पेसिफिक है या जनरल है. ओके, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए लेट्स स्टार्ट. नाउ there is a list of articles जो पहले हम पढ़ेंगे और उनके हिसाब से एग्जाम्पल्स लेंगे. A and the बहुत इजी है, बहुत बेसिक है and only 3 examples we have. A and the. सबसे पहले हम करेंगे indefinite articles. दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं. फर्स्ट इज indefinite, सेकंड करेंगे हम definite. तो पहले हम करते हैं indefinite articles. ऑलराइट, A and an. 3 आर्टिकल्स हम पढ़े हैं, A and the. तो इसमें से A, and an. Both of these are indefinite articles. When are they used? They are used when we do not refer to any particular person or thing. मतलब किसी भी particular person या thing में जब refer नहीं कर रहे. Which means generally. जब हम किसी भी general person या thing की बात कर रहे हैं तो हम a या फिर an यूज करेंगे. कैसे वो हम एग्जाम्पल्स में समझेंगे. All right, so the first type of articles, for the indefinite articles, we are going to study now the words which are singular, which are countable nouns, and they begin with a consonant sound. क्या आपको देखने में लग रहा होगा कि इतनी सारी कंडीशंस याद कर रखनी पड़ेंगी, पर ऐसा नहीं है. हम एग्जाम्पल समझेंगे तो यू विल सी हाउ इजी इट रियली इज.
So here you see, he is a policeman. Here the article being used is a. Now let's see why is a being used. You see the noun. The noun here is singular. Singular matlab it is only one policeman that we're talking about. We're not talking about multiple policemen, right? Singular ho gaya. Then it is countable because you can count the policeman is only one. And consonant sound because per starts per, that this sound is a consonant sound. So we are using a. Okay. Then she doesn't own a house. What are we using a for? We are using it for house. And house is singular because we're just talking about one singular house, one particular house. And it is countable also. And then it begins with a consonant sound. House begins with the sound her, and her is a consonant sound. So all the three conditions. So now it is we are using a here. Then similarly for the third example, it says I have a pen. Now pen, it is for the noun pen for which a is being used. Pen is singular, only one single pen. It is countable and it begins with a consonant sound. Starts with per. Per is a consonant sound. So we are using a here. समझ गए कि जब सिंगुलर हो, काउंटेबल नाउन हो और कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम क्या यूज करेंगे? अ. Now let's see the next conditions. Okay, so here in the next formation we have singular, जब singular word हो, countable noun हो और vowel sound. You see, इसके हम examples लेते हैं. Single and countable noun तो सेम है, बस हमें देखना है vowel sound क्या होती है. First example says I am an actress. So जब देखो जब सिंगल हो, काउंटेबल नाउन हो और वॉवल साउंड हो तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? An. Okay. I am an actress. Actress. Actress is a singular noun. We were only talking about a single actress. It is a countable noun and it is beginning with a vowel sound. Start हो रहा है actress. A जो sound है that is a vowel sound. So vowel sound. So we are using an. Okay. Next, he did not get an invitation. Invitation को देखना है. Invitation जो है वो singular है, countable है और vowel sound है. Vowel sound कैसे है? Invitation. A is a vowel sound. So it is starting with, so we are using the article an. Okay. Now the third example. She had an infection. हम यहाँ पे देखेंगे अपने word infection को. It is singular. We are talking about one infection. We are talking about a countable noun. And infection starts with a. I. So this one again starts with a vowel sound and we will be using the article an. तो हमने देखा कि जब सिंगुलर हो, काउंटेबल नाउन हो, वॉवल साउंड हो तो हम यूज करेंगे an. और पिछले में जब सिंगल था, काउंटेबल नाउन था, पर जब कॉन्सोनेंट था तब हमने क्या यूज किया था? Then we used a. अब vowel के लिए we have used an. Right? I hope it is clear. Let's move on. Okay, so the next category is
in agreement with adverb or adjective if any. Now this one means अगर कोई adverb होगा या कोई adjective होगा तो हम उसके रेफरेंस में कोई उसके रेफरेंस के साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे. ओके सो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव्स क्या थे और एडवर्ब्स क्या थे. क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम. एडवर्ब्स क्या थे? एडवर्ब्स वर द वर्ड्स which answer the questions like which answer the questions of, there were these 5 questions, if you remember, just write them down. When, where, how often, and to what extent. Okay, these were the questions which were being answered by adverbs. And adjectives. Adjectives were what words? Adjectives were the words which describe something. Okay. So अगर कोई adverb आएगा या adjective आएगा तो हमारे articles कैसे use होंगे? Let's see that now. Just erase this. Okay. So these are the examples. Now in examples में हम adverb और adjective करने से पहले let's do one thing. These are these 2 examples. अब इन examples में आप ये दोनों हटा दीजिए और यहाँ पर भी ये हटा दीजिए. ठीक है. और सोचो कि यहाँ पे एक ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक है. तो अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होगा. This was the question which we did in previous slide as well. I am dash actress. Actress जो है, it is a singular, it is a countable noun, but it is beginning with a vowel sound. Vowel sound. Actress, a. That's a vowel sound. So यहाँ पे the article used will be an. Right? Up the next example, he did not contract dash disease. Now here, disease के पास हमें article use करना है. So disease is singular, it is countable, but it is beginning with a consonant sound. And the ones which begin with the consonant sound, we use the article a. Right? But now you have to notice the difference. यहाँ पे हमारे पास a young and an infectious है. तो अब यहाँ पे आर्टिकल्स कौन से यूज होंगे? यहाँ पे जब हमारे पास ये वर्ड आ जाता है young. Young क्या है? एक adjective है. Why is it an adjective? Because you remember we learned that adjectives are the words which describe something. And what is this word young describing? It is describing the actress. Actress. So young is an adjective. And now young is beginning with a consonant sound. Here. So here we will be using the article a. तो जब हमारे पास adverb या adjective हो तो हम sound जो देखेंगे वो हम देखेंगे उस adverb या adjective की. जो noun है उसकी नहीं, जो adverb या adjective उससे पहले आ रहा है. Alright? Similarly, in the second example, we have an infectious disease. Now here, the adjective is infectious because it is describing what? It is describing the disease. यहाँ पे भी we will be using the article an. Why? Because infectious, it starts with a vowel sound. Infectious. A. Right? So ऐसे ही हमने देखा कि अगर यहाँ पे adverbs और adjectives नहीं होते
तो हमारा कंप्लीटली ऑपोजिट होता। यहाँ पे हम एन यूज करते और द सेकेंड वन में हम अ यूज करते, बट यहाँ पे बिकॉज एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव है, सो वी आर यूजिंग अ एंड एन। क्यों? क्योंकि we will be seeing the sound of the adverb or the adjective and not the noun. All right. I hope you have understood. Now let's move on to the next category. So the next category tells us sound is important, not the letter. Okay. Now, you see sound is important, not the letter. This one means, हम example से देखते हैं, जैसे you see this. यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि हम जब कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट जब कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो और जब वॉवल साउंड हो। जब कॉन्सोनेंट साउंड हो तो वी यूज अ, एंड जब वॉवल साउंड है तो वी यूज एन। अब आपको रिमेंबर करना है कि यहाँ पे हम साउंड की बात कर रहे हैं, लेटर की नहीं। मतलब कोई लेटर ऐसा भी है जो कॉन्सोनेंट होगा पर उसकी साउंड वॉवल की होगी, या फिर कोई वॉवल होगा पर उसकी साउंड कॉन्सोनेंट की होगी। लेट्स सी द एग्जांपल्स। यहाँ पे आप देखो, शी इज अ यूरोपियन सिटीजन। नाउ यूरोपियन, यूरोपियन जो है इट इज स्टार्टिंग विद एन ई। नाउ ई इज अ वॉवल, ई वॉवल है पर इट इज अ वॉवल, बट इसकी जो साउंड है इट हैज अ कॉन्सोनेंट, has a consonant sound. वॉवल होते हुए भी साउंड कॉन्सोनेंट की है। य, यूरोपियन, य इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम यहाँ पे अ यूज कर रहे हैं। ओके। सिमिलरली फॉर ही गोज टू अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑल्सो, यूनिवर्सिटी इज बिगिनिंग विद अ वॉवल, बट जो साउंड है यूनिवर्सिटी य, that is a consonant sound, so we will be using article a. Then next examples, next set of examples, you see I will reach in an hour. Here r, r जो है this is starting with the consonant, but जो sound है वो vowel की है, and r is a starting with a vowel sound, so we will be using the article an. Similarly, she got an F in her exam. An F, F है तो हमारा consonant, पर sound क्या है? F, A से start हो रहा है, A is a vowel sound, so we will be using the article an. All right, I hope you have understood कि हमें साउंड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एंड लेटर नहीं। लेटर तो वॉवल भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, पर उसकी साउंड उससे ऑपोजिट भी हो सकती है, तो हमें साउंड पे ध्यान देना है। ओके। ओके, सो हम जब इनडेफिनेट आर्टिकल्स के लिए पढ़ रहे हैं तो ये हमारी लास्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वी ओनली यूज देम फॉर सिंगुलर एंड नॉट प्लूरल। ठीक है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने, आई सॉ अ बेयर्स इन येलोस्टोन नेशनल पार्क। अ बेयर्स, बेयर्स एस, दिस इज प्लूरल। सो जैसे कि हमने शुरू में भी पढ़ा था कि जो हमारे indefinite articles हैं we only use them for singular and
एंड नॉट फॉर प्लूरल। ये प्लूरल है तो यहाँ पे नहीं यूज होगा, यहाँ पे अ नहीं यूज होगा, दिस इज इनकरेक्ट। बट जब है आई सॉ bears in Yellowstone National Park, so bears में there will be no article used, right? अगर सिर्फ a bear होता, it would have been bear. I saw a bear, तो हम a यूज करते, okay? This is easy. Now let's move on to the next category. Okay, so now we are moving towards the next category of articles. हमने अभी पढ़े थे indefinite articles. Indefinite. Those were the ones which were एक था a and the other one was an. यहाँ पे अब हम करेंगे second category of articles which is definite articles, and the only article we have in this category is the. The कब यूज होता है? When we are referring to any particular person or thing. जब हम specific बात कर रहे हैं, definite चीज की बात कर रहे हैं, specific. हमने देखा था ना indefinite में कि हम किसी general चीज की बात कर रहे हैं, पर यहाँ में हम एक particular person या thing की बात कर रहे हैं. Alright, let's see the examples. Now you see when it is used, when the is used. First, it is used to talk about people and things we have already mentioned. देखो example. She's got 2 children, a girl and a boy. हमने पहले बताया कि she's got 2 children, a girl and a boy. हमने generally बताया कि एक लड़का है, एक लड़की है. पर हम जब उन्हीं गर्ल एंड बॉय के बारे में दोबारा बता रही हैं, जब वी आर मेंशनिंग देम अगेन, सो व्हाट आर वी यूजिंग? वी आर यूजिंग द बॉय, मतलब वही पर्टिकुलर बॉय 14 है और वही पर्टिकुलर गर्ल शी इज 8. ओके, सो इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट पीपल एंड थिंग्स वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, जब हम उन्हीं को रेफर करते हैं दोबारा. सेकेंड कैटेगरी, व्हेन वी आर सेइंग which people or things we mean, जब हम किसी को particularly point out करके बता रही हैं generally. तो जैसे यहाँ पे example है, who's the girl in the car over there with John? हम एक particular लड़की की बात कर रहे हैं, एक लड़की है जॉन के साथ कार में, so who is the girl in the car over there with John? Okay, the girl, the car, specifically बात कर रहे हैं, कोई रैंडम बात नहीं हो रही. यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक गर्ल के बारे में बात कर रही हैं, पॉइंट आउट करके. थर्ड, व्हेन इट इज क्लियर फ्रॉम द सिचुएशन व्हिच पीपल और थिंग्स वी मीन, मतलब जैसे कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट. अब जो टेबल है, टेबल पे यू नो देयर इज सॉल्ट पेपर के जो बॉक्सेस होते हैं, से could you please pass the salt, तो हम specifically salt की ही बात कर रहे हैं. It is clear कि which salt we're talking about, which thing we're talking about. So the salt. Okay, the is very easy. Now next, okay, now when there are few more categories, कहाँ the use होता है. थोड़े एग्जाम्पल्स हैं आपको समझाने के लिए. जैसे यू सी सुपरलेटिव्स. सुपरलेटिव्स जैसे हमने पढ़ा था एडजेक्टिव्स में होते हैं थर्ड डिग्री, जब हम बताते हैं कुछ हाईएस्ट लेवल या लोएस्ट लेवल. तो यहाँ पे जैसे हम कह रहे हैं एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. द हाईएस्ट माउंटेन, सबसे बड़ा, मतलब एक ही तो हाईएस्ट माउंटेन होगा, 2 हाईएस्ट माउंटेन तो नहीं हो सकते ना.
तो हम एक स्पेसिफिक उसकी चीज की बात कर रहे हैं, which is the highest mountain. So we will be using the article the here. Okay. Now next, inhabitants of a country. Now here the example, inhabitants होते हैं जो किसी country के जो citizens होते हैं, जैसे British, जैसे Indian, the Indian people, the Indian live in India. वैसे ही the British, क्योंकि British तो एक ही कैटेगरी, हम स्पेसिफिक लोगों की बात कर रहे हैं, तो inhabitants of a country के लिए भी हम the यूज करते हैं. होली बुक्स, क्योंकि होली बुक्स जो होती हैं रिलीजन की एक ही होती है, देयर इज ओनली वन बाइबल, राइट? सो वी रेफर टू इट द बाइबल, द भगवद गीता, द कुरान. नेचर के लिए द अर्थ, द सन, द स्काई, द स्टार्स. रिवर्स भी एक देयर इज ओनली वन गंगा, वन कृष्णा, and the Thames, all these rivers, this is only one river, the Ganges, the Krishna, the Thames. Okay, then seas and ocean, ये भी सिर्फ एक चीज ही है ना दुनिया में. So the Arabian Sea, the Pacific Ocean. Mountain chains, again Himalayas की एक ही mountain chain है, so the Himalayas, the Andes, the Nilgiris. Okay. Monuments, again there is only one Taj Mahal in the world, so उसको हम specifically point out कर रहे हैं, the Taj Mahal. And then the Red Fort, we have the Eiffel Tower, we have the President, the Prime Minister. The अब musical instruments के लिए we will refer to it the violin, the guitar, the flute. For directions as well, हम point out जब करते हैं directions के लिए, then again we use the east, the north, the south, the west. Countries with plural names, the Philippines, the West Indies. जिससे और हम कहते हैं the United States of America, the United States of America. Okay. Then words such as last and next, the last phase, the next candidate. And ordinal numbers के लिए भी the first edition, the second row. देखो फर्स्ट एक ही होगा, लास्ट भी एक ही, सेकंड भी एक ही होगा, इधर लास्ट भी एक ही होगा, नेक्स्ट भी एक ही होगा. तो हम सिर्फ स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं. यहाँ पे हर जगह आप देखोगे कि हम जब स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग द वर्ड द. ओके, सो ये थे फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द. नाउ लेट्स मूव ऑन. Okay, so now we have the final revision for the article usage flowchart. अगर आप ये आर्टिकल का जो फ्लो चार्ट है ये आप समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कोई भी आर्टिकल लगाना. Let's see. Now, first question you ask yourself is, what kind of noun am I describing? अब ये देखते हैं कि अगर हम एक स्पेसिफिक आइटम डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसके 3 कैटेगरीज हैं. इसमें अगर हम फर्स्ट कैटेगरी लेते हैं कि इफ आई एम डिस्क्राइबिंग वन स्पेसिफिक आइटम, तो अगर तो ये नाउन मास नाउन है या प्लूरल है तो प्लूरल में हम क्या यूज करेंगे, द. अगर कोई स्पेसिफिक आइटम है और सिंगुलर है तब भी हम द यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक आइटम है. स्पेसिफिक आइटम जब सिंगुलर होता है तो वी यूज द. ऑलराइट, पर स्पेसिफिक आइटम अगर प्रॉपर नाउन है तो हम द नहीं यूज करेंगे. जैसे इफ आई रेफर टू माय नेम, आई से गिव दिस पेन टू आस्था. आस्था इज अ प्रॉपर नाउन, राइट? आस्था स्पेसिफिक भी है, पर
यहाँ आस्था प्रॉपर नाउन है, तो हम ये नहीं बोलेंगे गिव दिस पेन टू द आस्था, वी विल जस्ट से गिव दिस पेन टू आस्था. ओके, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, सो नन. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी है वन आउट ऑफ मेनी. जब हम वन आइटम आउट ऑफ मेनी डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो या तो प्लूरल है तो कोई भी नहीं यूज होगा, पर अगर वो सिंगुलर है अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो वी विल बी यूजिंग अ कॉन्सोनेंट साउंड. रिमेंबर कॉन्सोनेंट साउंड. अगर वॉवल साउंड से, तो वी विल बी यूजिंग एन. Then third category will be which is one which represents all cases everywhere. Which kind of noun? We are describing the one which represents all cases everywhere. अगर plural है तो कुछ नहीं, पर अगर singular है तो we will be using the. Okay? क्योंकि ये जो है this is representing all the cases everywhere. ये एक specific है जिसका कोई alternative नहीं है. It is being representing everywhere the same. So the. This is the article usage chart. Okay, so हम अपने indefinite and definite articles दोनों रिवाइज कर चुके हैं. Indefinite में हमने पढ़ा था a and an. Definite में हमने पढ़ा था एक the. So a कब यूज होता है, and कब यूज होता है, and the कब यूज होता है, हम सबके एग्जाम्पल्स भी देख चुके हैं, सबकी यूजेज भी देख चुके हैं, और इनके एक्सेप्शंस भी देख चुके हैं, एंड इनका फ्लो चार्ट भी देख चुके हैं. नाउ इज द टाइम फॉर आवर क्विज. अब जो ये क्विज है, हम क्विज लेंगे, 1 by 1 क्वेश्चंस लेंगे, एंड इसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी. These questions are based on the sample questions as per the IEO pattern. Okay. Now for every question you will be given 1 minute. 1 minute, 60 seconds you will be given as per the timer. Now why am I giving you 60 seconds? Because for every IEO question you are given more than 60 seconds in the final exam. तो मैंने सेफ साइड पे आपको 1 मिनट दिया है. अब इसमें 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे. 1 कैटेगरी जो लेस देन 1 मिनट में अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. तो जब ये कर लेते हैं तो यू शुड तो अगर आपने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके आप आंसर देख लीजिए. पर वो कैटेगरी जो स्टूडेंट्स ये 1 मिनट में आंसर नहीं दे पाते हैं, तो आपको डिसहार्टन नहीं होना है, दुखी नहीं होना है. आप पॉज करें और पहले अपना आंसर दें. जो भी आंसर आपको लग रहा है सही है वो आप आंसर लिखें, उसके बाद ही आप आंसर देखें. ये यू शुड मेक श्योर कि आप कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें, आप सबके आंसर दें, चाहे वो सही हो या गलत, वो सेकेंडरी चीज है. मोर इम्पॉर्टेंट इज कि आप पहले आंसर दें. Okay, so and for every correct answer you give yourself 10 points, and for every incorrect answer no points. Why no points? Because IEO में there is no negative marking. आपका आंसर चाहे गलत हो या फिर आपने आंसर नहीं किया हो तो आपको 0 ही मिलेगा. Okay, so it is better कि सपोज अगर आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं समझ आया, तो आपने उसे छोड़ना नहीं है, आपने उसको आंसर करना है. और चाहे आपको लग रहा हो कि ये शायद ये आंसर सही हो सकता है बी या सी से, तो आप उसे पक्का पॉइंट आउट करके आओ, मतलब उसे OMR शीट पे मार्क करके आओ, बिकॉज देयर आर चांसेस कि वो आपका आंसर सही हो जाए. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट.
Okay, so here the first category of questions are: fill in the blanks with the most suitable articles a, an, or the. A, an, or the. Let's see. These are the indefinite ones. This is the definite articles. दोनों के हमने करे हैं कि कब कौन सा यूज होता है. दोनों की categories we have studied. Now it's the time to apply them in the questions. The question says, Tanvi will buy dash new doll. Okay, Tanvi will buy dash new doll. Now here you see, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज होगा which is a, an और the. and इसके बाद हम जैसे सीखा था, अगर कोई adjective या adverb है, यहाँ पे देखे हुए आप new. New is what? New is an adjective. Why is it an adjective? Because it is describing the doll. Okay, so it is an adjective. Adjective को देखेंगे हम. Adjective is starting with n. Vowel. It's a consonant sound. So here we will be using a new doll. हम यहाँ पे indefinite use कर रहे हैं definite. यहाँ पे हम use कर रहे हैं indefinite articles. Why? Because तन्वी के पास उसने कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोला कि ये यही पर्टिकुलर डॉल खरीदेगी. उसने बोले अ न्यू डॉल, कोई भी न्यू डॉल तन्वी विल बाय. ओके, सो तन्वी विल बाय अ न्यू डॉल. द आंसर इज ए. Now here again हम अ एंड द में से चूज करेंगे. सेंटेंस पढ़ते हैं हम. I saw dash owl on the tree. यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि indefinite यूज होगा या definite. यहाँ पे I saw a dash owl on the tree. मैंने कैसा आउल देखा? मैंने कोई भी आउल देखा या कोई स्पेसिफिक आउल की बात हो रही है? यहाँ पे मैंने कोई भी रैंडम आउल देखा. I saw a random owl on the tree, right? तो यहाँ पे हम indefinite article यूज करेंगे. Indefinite article में हमारे पास ऑप्शन है a and an. ये कैसे पता चलेगा कि a यूज होगा या an? ये हमें पता चलेगा owl से. So owl is singular. It is a countable noun. And it is starting with a vowel sound. So vowel sound के लिए we use an. So the answer is A, an. All right.
Now the next question here. Let's read the sentence. The GK test will last for dash hour. Now यहाँ पे indefinite use होगा या फिर definite. यहाँ पे हम singular R की बात कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे हम एक particular R की से सिर्फ it will last. फिर कोई random R, हम सिर्फ एक जनरल R की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे indefinite article. और indefinite में हमारे पास ऑप्शन है अ या फिर एन या फिर अ, ठीक है. अब हम देखेंगे R. R जो है इट इज स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट. रिमेंबर H इज अ कॉन्सोनेंट, पर यहाँ जो साउंड है, साउंड इज ऑफ अ वॉवल, सो इट इज अ वॉवल साउंड. एंड फॉर वॉवल साउंड वी यूज एन. So the answer will be, the GK test will last for an hour. B. Okay. Okay, so here the question says, dash earth moves around the sun. Definite or indefinite? This one is pretty easy because हम बात कर रहे हैं earth की. Earth क्या है? Earth is definite. Earth is एक definite चीज है, एक specific चीज है. Specific. Earth एक ही तो है. हम एक specific earth की बात कर रहे हैं. We cannot be talking about two earths or 5 earths. There is only one earth. So specific है, and there's only one earth. हमने nature में भी पढ़ा था, the is used for the elements of nature also. So the earth, the sun. So the article here will be C, the earth. All right, let's move on. Here as well we have the examples of indefinite versus definite. पहले हमें ये figure out करना है. Dash Himalayas are in the north of India. Now you see dash Himalayas in the north of India. यहाँ पे कौन सा article use होगा? Indefinite or definite? Himalayas जो हैं वो एक ही हैं, definite हैं, एक particular Himalayas हैं और एक specific mountain range है. Also हमने पढ़ा था that the is used for
माउंटेन रेंजेस जब हमने टेबल पढ़ी थी द के लिए. So we will be using the Himalayas. A. Answer will be A. Similarly, you see यहाँ पे the north of India. Direction के लिए भी पढ़ा था हमने कि we use the article the. All right. So for mountain ranges and for directions as well, we use the articles the. Now next. So now the choice is between indefinite and definite articles. Let's see. The question says dash cows give us milk. यहाँ पे देखो हम बात कर रहे हैं किसकी? cows की. cows क्या है? plural है, right? And plural के लिए we always know that we will be using definite article. Indefinite are only used in the situation where there is singular nouns. Okay? And और भी exception और भी conditions होती हैं, but plural है तो indefinite तो कभी नहीं आएगा. ठीक है? plural के लिए the cows give us milk. So cows, definite article the. So the answer is A. So here again the choice is between indefinite versus the definite. Let's see कौन सा आएगा. The question says Kohli is dash captain of Team India. Now here we're talking about Virat Kohli is dash captain of Team India. Here अब देखो captain of Team India. यहाँ पे हम क्या किसी indefinite चीज की बात कर रहे हैं या हम किसी definite चीज की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम एक specific चीज की बात कर रहे हैं which is specific, which is the captain of Team India. There can be only one captain of Team India, right? जो cricket team है उसका एक ही captain हो सकता है. So we're talking about one specific thing, which is definite article. So the answer here is C, the. Alright?
Alright, so यहाँ पे again we have a choice between the indefinite and the definite articles. हम पहले sentence पढ़ते हैं. Now the sentence says the princess lived in a dash very big palace. So here you have to figure out कि यहाँ पे हम definite use करेंगे या indefinite. ये हमें कैसे पता चलेगा? ये figure out करके कि क्या हम एक specific चीज की बात कर रहे हैं या एक indefinite चीज की. Now यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक indefinite चीज की, कोई general चीज की, single and countable चीज की. Very big palace. Princess lived in a very big palace. हम जब पहली बार बता रहे हैं तो हम a very big palace बोलेंगे. ठीक है, indefinite article यूज करेंगे. अगर हम इसके आगे सेंटेंस लिखते, जब हम पैलेस को डिस्क्राइब करते आगे, तब हम यूज करते the palace is magnificent. जैसे कि हमने the के लिए पढ़ा था कि जब हम एक ऑलरेडी नोन चीज के बारे में बोल रहे हैं तब हम the यूज करेंगे. पर यहाँ तो हमें पहली बार ही पता चला है ना, तो यहाँ पे हम indefinite article में हमारे पास a भी है and भी है. तो हमने इसमें a क्यों यूज किया है? क्योंकि ये जो हमारा एडजेक्टिव है very, this is starting with a consonant sound. Very, ver, it is starting with ver. V की sound है ver. So consonant sound for which we use a. So the princess lived in a very big palace. The answer is B. So here again let's see कि हमारे पास indefinite article आएगा या definite article आएगा. Nidhi's grandpa goes to dash city park close to their house for morning walk. Now you see, अब यहाँ पे हमें figure out करना है कि क्या कोई general चीज है या specific चीज है. Nidhi's grandpa goes to dash city park close to their house for morning walk. Now you see, जो निधि के ग्रैंडपा हैं वो सिटी पार्क में जाते हैं क्लोज टू देयर हाउस. अब जो सिटी पार्क है ना, वो हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया है कि ये एक ही सिटी पार्क है विच इज क्लोज टू देयर हाउस. ओके, सो देयर इज दिस डेफिनेट पार्क, मतलब ये स्पेसिफिकली हमने बता दिया है कि ये एक ही सिटी पार्क है जिसमें निधि के ग्रैंडपा जाते हैं. दैट सिटी पार्क विच इज क्लोज टू देयर हाउस. तो एक ही सिटी पार्क है विच इज क्लोज टू देयर हाउस. एंड देन उसके लिए हम यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल क्या है? सी, द. सो निधि's grandpa goes to the city park close to their house for morning walk.
here again we have a choice between definite and indefinite articles. Let's see इसमें कौन सा आंसर आएगा. So first of all, let's read the question. The question says, dash milk is very important for the growing children. Okay, now here you see, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा. There will be no article here. क्योंकि जो मिल्क है ना, मिल्क के लिए ना तो हम कुछ पर्टिकुलर रेफरेंस दे रहे हैं, ना हम कुछ जनरल रेफरेंस दे रहे हैं. We are just referring to milk, which is very important for the growing children. यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा. यहाँ पे हम नाउन के लिए कोई भी रेफरेंस नहीं दे रहे हैं. ओके, सो दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी आर्टिकल, क्योंकि मिल्क जो है वो कोई काउंटेबल नाउन नहीं है, ठीक है. और मिल्क जो है वो एक स्पेसिफिक चीज भी नहीं, एक स्पेसिफिक चीज भी नहीं है. कोई माउंटेन रेंज, कोई एनिमल, कोई सिटीजन्स, कुछ वो भी नहीं है. सो मिल्क, देयर विल बी नो आर्टिकल. ओके, here again choice between indefinite and definite articles. Let's see. George completed his project in dash entire day. यहाँ पे हम एक entire day की बात कर रहे हैं. क्या एक specific entire day है या कोई भी random entire day है? यहाँ पे एक random entire day है, which is singular entire day. अब यहाँ पे हमें देखना है कि एक तो indefinite article use होगा, बट इस indefinite article में a यूज होगा या फिर an यूज होगा. अब हमें पता है कि a और an कब यूज होता है. A is used when there is a consonant sound and a is used when there is a consonant sound and an is used when there is a vowel sound. यहाँ पे हम देखेंगे entire. Entire is the adjective for day. Noun है day, इसका adjective है entire. हम entire का sound देखेंगे. Entire begins with e. E is a vowel. इसकी sound भी vowel sound है. Entire, right? So the answer is an. George completed his project in an entire day. Time's up.
Okay, so here again we have a question. This sentence says, Ishika bought dash oven to bake a cake. Now, जो cake Ishika bought dash oven to bake a cake. All right, यहाँ पे indefinite या definite. यहाँ पे we know कि एक रैंडम सिंगुलर चीज की बात हो रही है कि इशिका के एक अवन ले आई. अब पर हम उस अवन को स्पेसिफाई नहीं करें कि वो अवन कैसा था या क्या था, बस वो एक अवन ले आई. ठीक है, तो एक वो इनडेफिनिट चीज की बात हो रही है. सो वी विल बी यूजिंग ए इनडेफिनिट आर्टिकल. इनडेफिनिट में अब हम अ यूज करेंगे या एन यूज करेंगे. लेट्स सी. अवन. नाउ अवन स्टार्ट्स विद वॉवल and इसकी साउंड भी है वॉवल की. So we will be using Ishita bought an oven. Right? B is used. Time's up. Okay. अब यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे हमें डबल ब्लैंक्स मिलना शुरू हो गए हैं. So it is a little tricky. Let's see. पर हम एक एक ब्लैंक को लेंगे तो आसानी से हो जाएगा. So let's see the question first. And the question says, Mr. James is dash European, not dash Asian. European and Asian. ठीक है, European, Asian. European को अगर हम करने लगे तो आप देखो इसका जो starting है sound. It is starting with a vowel, but sound क्या है? Sound. The sound is y, which is a consonant. So यहाँ पे क्या कौन सा आर्टिकल यूज होगा? यहाँ पे we will be using a. Is a European, not dash Asian. अब Asian. Asian is starting with A. ठीक है, and it is a consonant. Is it a vowel sound? Vowel sound है and इसका शुरू भी vowel से हो रहा है, तो यहाँ we will be using an. So Mr. James is a European, not an Asian. So the answer is B. Okay. Time's up.
Now we will go a little quickly. I hope you have, मैं आपको ज़्यादा explanations नहीं दूंगी. I hope you have understood the explanations. Just a few quick explanations now. Alice picked up dash umbrella and went out in dash rain. Umbrella है, singular है, ठीक है, countable है, एक random umbrella की बात हो रही है. Starting with a vowel. यहाँ पे हो जाएगा an. ठीक है. But the second blank you see and went out in dash rain. अब जो rain है, rain क्या है? Element of nature है. Nature के elements के लिए हमने क्या पढ़ा था? कौन सा article use होगा? The. So went out in the rain. All right. So what is the answer here? B. An and the. Alice picked up an umbrella and went out in the rain. Easy. Okay, so the question here is Dash Gandhi Museum is situated near Dash Akbar Hotel. Now, Gandhi Museum and Akbar Hotel. You see, both of them are specific things. Specific. Gandhi Museum, Akbar Hotel. And specific things, specific places के लिए हम कौन सा article use करते हैं? Which is the definite article. Definite article, the. यहाँ पे भी the Gandhi Museum is situated near the Akbar Hotel. Okay? यहाँ पे no matter यहाँ पे vowel से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, ये मैटर नहीं करता. यहाँ पे हम स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं तो द ही यूज होगा. ऑल राइट. Time's up. Now we have the question, different category. Choose the correct option to complete each sentence. इसमें से कौन सा option हमें choose करना है? The area of this playground is huge. बात किसकी हो रही है? Area की. Specific area की, okay? Not indefinite. Not indefinite.
यहाँ पे हम डेफिनेट एरिया की बात कर रहे हैं, एंड डेफिनेट एरिया के लिए हम एक ही आर्टिकल यूज करते हैं, which is the. So the area of this playground is huge. Time's up. Okay, so here now both these questions हमने पिछले भी किया, ये भी किया. These are hot questions, high order thinking skills questions. So let's see. इसमें आपको डबल मार्क्स मिलते हैं, 2 marks per question. Okay. The question says we saw a dashboard in the lake. Dashboard was of blue color. ये बहुत ही important example है, बहुत important. Why? क्योंकि ऐसे double examples आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी है. देखो, बहुत अच्छा example है. We saw dashboard in the lake. क्या हुआ? हमने एक बोर्ड देखी, एक वो क्या बोर्ड थी, कैसे बोर्ड थी, हमें नहीं पता, पर हमने एक बोर्ड देखी ना. दिस इज इनडेफिनिट. हमने कोई भी एक रैंडम बोर्ड देखी, ठीक है. कोई भी हम डेफिनेट चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि हमने एक बोर्ड देखी. हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं क्या बोर्ड थी, कैसी बोर्ड थी, बस एक बोर्ड देखी. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल. इनडेफिनिट में अ होता है और एन होता है. कौन सा यूज करेंगे हम, वो हमें बताएगा ये नाउन. बोट. बोट इज स्टार्टिंग विद ब. ओके. ब इज अ कॉन्सोनेंट एंड द कॉन्सोनेंट साउंड, सो we will have a here. We saw a boat in the lake. हमने एक बोट देखी, पर उसके बाद जब हम उस बोट के बारे में बता रहे हैं, हम उसी पर्टिकुलर बोट को दोबारा रेफर करके बता रहे हैं कि वही बोट जो थी ना, वो ब्लू कलर की थी. तो अब हमने स्पेसिफाई कर दिया है, अब वो एक ही बोट के बारे में बात हो रही है, किसी और बोट की नहीं. सो दैट बोट, द बोट, जो स्पेसिफिक बोट थी, ये हो जाएगा हमारा डेफिनेट आर्टिकल. हमने द के लिए पढ़ा था कि when we are referring to things which we have already mentioned previously, so we mentioned the. So we saw a boat in the lake. The boat was of blue color. Okay. All these are easy, but you have to be very careful. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगा. जब हम फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहे हैं तो we mention a boat. But when we mention the other one, the, जब हम mention करते हैं the boat was of blue color, जब हम second time उस already known चीज के बारे में बात करते हैं.
Time's up. Okay, now this is very easy. यहाँ पे definite, indefinite और no article. We went to dash नानी नैनीताल by car. अब यहाँ पे word है नैनीताल. हाँ, ये एक specific जगह है. I agree. एक single जगह है. But ये क्या है? नैनीताल is a proper noun. Very important. Okay? नैनीताल is a proper noun. And proper nouns के लिए हमने क्या पढ़ा था? हमने आप आर्टिकल का अपना यूजेज फ्लो चार्ट में जाके अगर आप देखेंगे तो आपको याद आएगा प्रॉपर नाउन के लिए we use no article. नैनीताल is a proper noun. Proper nouns क्या होते थे? They were the ones जो हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं. जैसे these names, these places, जैसे आस्था, जैसे आयुष, जैसे नैनीताल, जैसे दिल्ली, these are proper nouns. इनके आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, no article. Okay? So we went to Nainital by car. There will be no article used here. Alright? Alright, so that's all for today's class on articles. I hope you have understood the basic and fundamental concepts of articles. Now this is one topic, if you know the basics, it becomes very easy for you in any sphere of your life. Alright, so that's all for today's class. I hope you had some fun. See you the next time. Thank you.